Welcome to Shripriti Educational Online Classes. So today we are going to see the len function in set, tuple, list. Now we are going to talk about the len function in dictionary. So the len function is used to count the number of items, that is key value pair, in a dictionary. Here you can consider an example here. See, student is a variable which stores some type of items as a key value pair in a dictionary. Name, Sita, roll number 121, class 11th, then print student. As I used here print function to print the dictionary which are stored in the variable student. So मैंने स्टूडेंट पास कर दिया प्रिंट फंक्शन में से, तो उसने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, मुझे बता दिया कि नेम सीता, ये एक की वैल्यू पेयर एक आइटम काउंट होगा, ये एक आइटम काउंट होगा, इसको एक आइटम बोलेंगे जो कि की वैल्यू पेयर से मिलके बना है। फिर सेकेंड, ये भी आइटम है जो की वैल्यू पेयर से मिलके बना है। की हो गई रोल नंबर, वैल्यू हो गई 121, क्लास हो गई की और वैल्यू हो गई 11। तो ये 1 2 और ये 3। अब मैंने यहाँ पे 3 किया है तो यहाँ काउंट कितने आ गए, 3 आ गए। सो दिस इज द आउटपुट। नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल एंड कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। हियर यू कैन सी, मैं यहाँ से रिलेट कर देती हूँ, प्रीवियस एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जिसमें कितने अभी आइटम दिख रहे हैं हमें। नेम मोहन, एज 30, कोर्स पाइथन, रोल नंबर 121। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट करवा दिया और इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया प्रिंट लैन, फिर ले लिया मैंने स्टूडेंट, सेव इट एंड रन। कितने आइटम्स हो गए, 1 2 3 और ये 4। कितने आइटम्स हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। 4 आइटम्स आर प्रेजेंट इन स्टूडेंट dictionary. You can see in the output 4 items. Thank you. So please stay safe during COVID-19 and don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.